जो भी हूँ, फादर ने मुझे अच्छे जीन्स दिए और ये कहा कि दुनिया में 2.5 सुख हैं। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा रात को अच्छी नींद आना, और बाकी आधा सुख पूरी दुनिया। सर मैं पहले आपके ये ले लूँ ऑटो। हाँ, तो स्पेशल पेन है। अच्छा, नहीं मेरा तो एक सस्ता सा पेन है, 30 रुपए का, मैं वही यूज़ करता हूँ यार। एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा चल जाता है, यही फ़ायदा है इसका। प्लास्टिक का पेन है। तो ये राइट अशोक ना? अशोक व्यास जी। तो मेरा बहुत ही सौभाग्य है, मैं डॉक्टर शिव सरीन जी के साथ बैठा। बहुत बड़े डॉक्टर है, मेरे को इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। अब ये किताब जो है, इसका जो प्रीफेस में पहले जो लिखे जाते हैं उसमें फालिस नरीमन जी हैं, करण सिंह जी हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, तो अरुण पुरी, विद्यु विनोद चोपड़ा और सैम पित्रोदा वो अलग तरह से ख्याति प्राप्त कर गए अभी, बट वो भी है, नंदन नील करिए। बट मैं बात शुरू करना चाहता हूँ। मुकेश अंबानी जी जो एक बात कहते हैं कि आफ्टर रीडिंग दिस बुक वन वुड रियलाइज that good health is not as much a function of one's genetic makeup as it is of one's lifestyle choices। पर इसके भी पहले जाते हैं अगर हम डॉक्टर साहब, तो आपकी इस पुस्तक में, जैसे हम उपनिषदों में कहते हैं, एक कथात्मक शैली में ज्ञान दिया जाता है। तो आप इस तरह के कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। मेरे लिए कैरेक्टर्स हैं वो, आप उनको पेशेंट के रूप में जानते रहे। उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात आती है, उसकी एस्पिरेशन क्या है, कैसे उनके इमोशनल इक्विलिब्रियम फैमिली में है, वो सारी बातें। आप कैसे पेशेंट से इतना क्लोज रिलेशन आपका होता है? मेरे को लगता है अक्सर डॉक्टर ज़्यादा वो खटाखट देखता है, भाई ये है, ख़त्म कर देता है। क्योंकि हम लोग जो सीखते हैं वो सारा तो पेशेंट से ही सीखते हैं। मतलब एवरी पेशेंट इज़ अ बुक। अगर उसके बीमारी या उसके इमोशंस या उसके परिवार या उसके काम के बारे में पता नहीं होगा तो हम उसे ठीक कैसे करेंगे? खाली दवाइयों से ठीक करना हो तो वो खुद ही पढ़ करके दवाई ले लेगा। तो वी हैव टू हील हिम, वी जस्ट डोंट हैव टू ट्रीट हिम। एंड हीलिंग इज़ ए प्रोसेस विच रिक्वायर्स कंपैशन, which also requires lot of knowledge and putting it in easy। so ये जो बुक के अंदर जितनी 21 स्टोरीज़ हैं वो ईच इज़ ए प्रोटोटाइप पर्सन। अब जैसे थायराइड का है, कई लोग आते हैं कहते जी मैं मोटा इसलिए हूँ कि मेरा थायराइड वीक है तो मैं इसलिए मोटा हो गया। पर इस बुक में रियल स्टोरी है एक पुलिस वाले की कि भाई वो मोटा था और थायराइड की गोली खा रहा था। मैंने उसको समझाया कि भाई अगर आप थोड़ा सा वज़न घटा लोगे तो हो सकता है कि आप थायराइड की बीमारी भी कम हो जाए। और स्लोली स्लोली उस आदमी ने अपना वेट घटाया एंड टुडे he is almost on 1/3 of the thyroid medications. He is all right. So this is the message that I want to give, that if you are very careful about your health and you do not outsource this to doctor। अब क्या होता है, डॉक्टर्स जनरली ये सोचते हैं मरीज़ और आ जाए अपने पास तो ठीक रहेगा। पर मेरी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है कि अगर मरीज़ ना बने, बंदा हेल्दी ही रहे, सिर्फ ऐसी बीमारियां जहां इन्फेक्शंस या कैंसर्स टाइप हों वहाँ पे ही डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़े। मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स कैन बी मैनेज्ड, कैन बी प्रिवेंटेड। एंड देयरफॉर टुडे दिस बुक ओन योर बॉडी इज़ ए मैसेज coming from the core of my heart that own your body, be the owner of good health। जैसे होता है ना neighbors envy, owner's pride। why don't you have body like this? ये लोग सब कहें यार देखो क्या बंदा है। अच्छा, ओन योर बॉडी इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। वो आप उसके बारे में बताते हैं। और मैं स्कूल के समय से याद करूं तो जिस सब्जेक्ट में टीचर अच्छा होता था, हाँ, वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा। तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे टीचर हैं। ये किताब भी एक प्रकार से पुस्तक के माध्यम से जो हमको सिखा रही होती है। तो जैसे ओबेसिटी वगैरह वर्ड मुझे लगता है इतना क्लीशेड हो गया, ऐसा लगता कोई भी कहेगा मोटापा खराब, लेकिन जैसे आपने कहा तो मुझे खुद ही लगा कि यार मुझे ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। एक तो मैं ITV गोल्ड के साथ रहा हूँ 25 साल से, अभी भी हूँ। एक मैंने स्पिरिचुअल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब चैनल शुरू किया, एरमल स्टूडियो। और मुझे लगता है जब बॉडी अगर हेल्दी नहीं है तो फिर स्पिरिचुअल बातें करने का मतलब भी नहीं रहेगा। आपकी किताब मैंने थोड़ी सी पढ़ने का सौभाग्य हुआ और मैं देख रहा था सारे क्वेश्चंस मेडिकल ओरिएंटेड थे, विच वाज नेचुरल। बट आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू कि जिस तरह से आपने अपनी स्टोरीज को नरेट किया है
और उसमें काफ़ी टर्म्स ऐसी थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन चूंकि आप वो माँ बेटे का जो एक दूसरे का प्रेम है, उसकी एस्पिरेशंस है, उसको जिस तरह से आप नरेट करते हैं, मुझे लगता है आप बॉम्बे में भी एक्टिव हैं तो काफी फिल्म वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप बहुत अच्छा लिखा। तो बट ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली द क्वेश्चन इज, ये जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग और presenting your ideas in the form of a book by writing, it requires some extra skill which is not medical skill. तो वो कैसे डेवलप हुई है आपकी? It was natural, या you worked on the craft of writing and putting your ideas together in such a way that for a layman, जो कि I was getting distracted by cirrhosis या पता नहीं एस्ट्रो, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स थे, मैंने तो कभी सुने भी नहीं थे, but still it was holding me tight. So thank you. Kindly say something about your writing skill. I never knew this book would be found useful. Thank you for your positive support. पर हाँ, बड़ी intense desire से लिखी थी, और मेरी writing skills के बारे में आप लोग ज़्यादा बताएंगे मेरे से, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा. But हाँ, each one of them I feel वो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करती. ईच स्टोरी इज ए सिंबल फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, एंड आई थिंक दिस इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज, एंड आई एम लर्निंग. एंड थैंक यू, आपने किताब पढ़ी, और जो समझ में नहीं आया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. तो मेरा प्रश्न ये है, आजकल जो बच्चों के साथ स्ट्रेसफुल करियर बिल्डिंग इन सबके अंदर उन्होंने अपना आपको एडजस्ट कर रखा है, ऐसे में आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आपके जो ये लाइव लेसन्स हैं, अगर इनका सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा प्रचार प्रसार हो. बिल्कुल, मैं कहना प्रचार प्रसार तो आप करेंगे, पर मैं 3 बातें कहूँगा. ठीक है. पहला कि हम लोगों ने दिल्ली में सर्वे किया, 13,000 बच्चे, प्रोजेक्ट है स्माइल, स्ट्रॉन्गर इंडिया थ्रू मिलियन हेल्थ एजुकेटेड स्टूडेंट्स, 1 मिलियन, अभी 13,000 की. दिल्ली में 13,000 में से जो 18 से 25 साल के हैं, सिर्फ 30% लड़के या लड़कियों की कमर होनी चाहिए उतनी है. 70% मोटे हैं, 70%. उनमें से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो दिन में 30 मिनट चलते. सिर्फ 80% लोग 30 मिनट चलते भी नहीं. तो आपका भारत क्या होगा? तो बहुत डिफिकल्ट है आजकल मोटिवेट करना बच्चों को. नहीं, सोशल मीडिया तो उस बात के लिए कि यार 80% लोग चलते ही नहीं है, तो आप करोगे क्या बैठ के सोशल मीडिया के? दूसरा पॉइंट, अगर आपको रात को सोना है और आप ब्लू लाइट देख रहे, ब्लू लाइट आपके कंप्यूटर की है या आपके मोबाइल फ़ोन की, तो आपका जो स्लीपिंग का हार्मोन है मेलाटोनिन, वो सिक्रीट ही नहीं होगा. यू रिक्वायर नो ब्लू लाइट फॉर मेलाटोनिन टू बी सिक्रीटेड फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर. 1 से 1.5 घंटे अगर आप सोने से पहले आप वो देख रहे हो ब्लू लाइट, बिल्कुल ठीक नहीं. ये बच्चों को पता ही नहीं. तो उनकी स्लीप 12 बजे शुरू होती है, 1 बजे, कई लोग तो रात को 2 बजे सोते हैं. दैट इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी. योर बेस्ट पीरियड इन द मॉर्निंग इज 4 to 5 to 6 o'clock. सोशल मीडिया पे कैसे ले जाएंगे वो आपकी बात है. और थर्ड, आई थिंक अगर आप वेस्ट देखेंगे, जो बच्चे, एक हेलेना स्टडी है बड़ी फेमस, HELENA, इसमें भी मैंने अमेरिका में और यूएस में, यूरोप में लगभग 60% बच्चे हेल्दी है, 40 अनहेल्दी. इंडिया का सर्वे देखें तो 70% बच्चे अनहेल्दी. तो आप देख सकते हैं भारत क्या होगा. हालांकि सीजे इज वेरी फिट, देख के आई एम सो इम्प्रेस्ड कि हमारे काउंसलेट जनरल जो है, न्यूयॉर्क इज लकी, बट यू आर लीड बाय एग्जांपल. एंड शाह साहब को देख लीजिए, ही हैजंट चेंज एट ऑल इन 50-60. You should come here more up. Welcome to New York, and congratulations for what you have done. We are extremely grateful to the Consulate for organizing this session, and to Premji Shah, who has organized it. I have two-fold question. One is a request to the Consulate, because this space is too small to accommodate you.
and the community that needs your knowledge. If you can have a Howdy Modi Medicine Square Garden, we can have your session in a larger place. So that is a request to the consulate under his office, we can organize that. We will organize it. We have other friends here who can do it. To what you just said is extremely knowledgeable. It is my life will probably change from tomorrow, even though Dr. Brani keeps on telling me what to do. But has it occurred to you what the other friend said? That while we keep on learning books after books after books, we all are very highly educated people. But can there be a book like yours or your book which is inculcated, incorporated in the education system from the day one? While we learn A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, everything we learn from childhood, but never had a book like this. I wish we had a book like this, where most of the 70% people would have probably gone to 7%. And you being a Padam Bhushan, so close to the Prime Minister, the government, Minister of Education, I think it will be worth if you could take, unless you have already taken it. This can change the direction of our country. Thank you very much. The only way I see is if you have the health and education ministry clubbed together, and first 10 years of life of a child, the health is more important as an education, and education is secondary. Because the child doesn't know what he is supposed to eat. Child doesn't know how much he is supposed to play. So I think it is the duty of the society and to educate the parents and the health and the education people कि बच्चे को 10 साल तक क्या खाना है, कितना एक्सरसाइज करना है. And your point is very valid, and I do hope we can move forward. And I do look forward for opportunities, if there are any, that this book or the message can be disseminated. Dr. Shiv Sarin is the only physician who has addressed both houses in Delhi, Rajya Sabha as well as the parliament, on the health issues. I think he is the only one. So you can see how respected relation. Yeah, last question. Dr. Umile Shahadya, the pediatrician by profession, and we have been doing the blood test in children only at the age of 1. This is the first time I came to know that 1-month-old child should have the test for and should be checked for the fatty liver. I hope there should be some way that the pediatricians have the knowledge that the children should be checked for this condition, and because pediatricians are responsible for the growth and development of the children, and they are the ones who teach the parents what to look for, food should be given, how the children should be taken care of. So is there any way, because it is so informative, I was really amazed how important it is for the children's development. So is there any way that the pediatrician can be taught at a large scale? Very grateful, very, very grateful to you, because this is very close to my heart, fetal medicine part, and there is a story of a lady and how the kids grow up, and you can look into how the gynecologist help. This is a true story. But to put it in perspective, about 10%, you know better, are children born who are overweight at birth. 1 in 10 in the world. And that is not the mistake of the child, it is the mistake of the mother. हम लोग कहते हैं यार pregnancy ज़्यादा खाना खिलाओ थोड़ा सा बच्चे के लिए अच्छा है. It may not be the best way, because the child is getting all that from the mother. Second, do not give sugar to the baby till the age of 3 years. Because all the bacteria which are settling for life are below the age of 3 years. So there is a nature paper that Asians give more sugar before the age of 3 years, so the kids have fatty liver. So do not give colas or especially corn syrup or those with O's, OSC, fructose, sucrose, maltose, glucose. So anything with O's up to 3 years is avoided. Natural food is okay, and this has now come in the new dietary guidelines by the government of India, just released about a week or two ago.
that do not give all this. And the third thing is the pediatrician is the actually backbone of our society. अगर आप बच्चों को पतला रखेंगे तो बड़े होकर के नहीं होंगे, पर अगर पतला बच्चा पैदा हुआ अंडरवेट और वो जाकर के ओवरवेट हो गया, because you are prepared for a small bag by your mother. This is your bag for the baby. But if that bag expands, and this is a New England paper by this guy Sachdeva, this is a whole series of studies published in New England Journal, that babies who were born underweight, if they become normal weight or overweight, they are gone. So remember that you should try and help the society by keeping underweight as underweight, normal weight as normal weight, overweight as normal. I'm a primary care physician, general internal medicine. जो आप describe कर रहे हैं, that is my दिनचर्या. Every single day, my patients के, I look at the neck, and कई बारी offend कर देता हूँ patients को कि you have this black lines that you're probably going to get diabetes. Watch out for that. And I check their A1C. The A1C is in the pre-diabetes range. Do you agree with some of what I have written? Absolutely. Many years ago, when I was a resident, 93, 95 की बात है, Dr. Sanjeev Chopra, Deepak Chopra के भाई जो हैं, he's an eminent gastroenterologist at the MGH at Mass General. He was giving a lecture, and that's when I first became aware of the fatty liver problem in our community. And since then, I have paid very close attention to that, and मैं आपको US के Indians का perspective बता रहा हूँ. आपने बात की कि we should have a collegium of problems that Indians face in the United States, living in the United States. So I see that all the time. If I look at the LFTs में जो आप बता रहे हैं, SGPT is elevated a lot of times. And दुबला पतला हो चाहे मोटा हो, it doesn't matter. I do see it, and then unfortunately the patients that I serve in Queens, there are a lot of taxi drivers who are sedentary. I do see a lot of alcoholism in that community also. So we get a lot of whammies, and then I'm so glad after student Dr. Sanjay Satapathy, he's the chief of hepatology at our hospital. So he was the one who was doing all these ultrasound for the 5-year-olds. Sanjay ka मतलब one of the extra projects other than his DM. So anybody going for angio at 7 in the morning, me and Sanjay would start doing. He wrote a paper of 491 patients going for angiography. He never published because he moved to the US. But this was the real work Sanjay had done with me. So coming to the question, so I agree totally with you, because like I said, it's very dincharya. Every single day I'm looking at these patients and I'm predicting इनको 5 साल में क्या होने वाला है, 15 साल में क्या होने वाला है. And that I've been in practice for 23 years, and that is coming true now. Unfortunately, a lot of my patients, I've lost a lot of patients because of heart disease, because of strokes, because of things that we predicted. अभी मैं बता रहा था प्रधान जी को, my youngest patient, 23-year-old college student, he was moving in, air conditioner को pick कर रहा था, he developed chest pain. Friday को वो आया, Friday को उसके साथ ये हादसा हुआ. Monday को he came to me, he was sweating, he looked sick. I got an ECG, he had FC elevation MI. Massive heart attack, his heart function was less than 50%. 23. He's here and hearty today after 23 years. So the question... What will happen to his children is the question. Right. Because you require at least 2 decades of silent genes. Exactly. अब उसके बच्चों का कुछ नहीं, उसके grandchildren का ही हो सकता है. So I took care of his mother also. She had type 1 diabetes in the past. So the question that I have for you is, I have identified somebody with fatty liver, NAFLD जैसे हम जिसको कहते हैं. Now what? How to treat? That we forgot. So there are 2 simple messages everyone can use. Height minus 100 is your weight. अगर आप 170 सेंटीमीटर हैं तो वजन 70 किलो. पर अगर डिफेक्टिव पीस पैदा हुआ है, you know now by now डिफेक्टिव पीस ना, नहीं पता लग गया. पर आपकी गलती से डिफेक्टिव नहीं, बस खानदान के कारण डिफेक्टिव पैदा हो गए. जैसे मारुति गड़बड़ बन गई तो यू कैन विड्रॉ दी मारुति और फोर्ड कार, बट यू कांट गेट द चाइल्ड बैक. वो तो हो गया. तो अगर पेरेंट्स में कोई गड़बड़ है, मतलब उनके कारण आप ऐसे पैदा हुए, तो वेट हाइट माइनस 105, तो आपका वजन 65 होगा. अगर पेरेंट का, आपकी हाइट
और फीमेल्स के लिए हाइट -105 फ्रॉम द बिगिनिंग, और अगर पेरेंट हैं तो हाइट -110। वेरी सिंपल फॉर्मूला कि ये तो मेरा वेट है, पर अगर फैटी लिवर हो गया इसके बावजूद देन दैट पर्सन हैज टू लूज अनदर 3 to 10% of weight. There is no shortcut. The BMI levels are going down and we are eating more. So the one way. And the second way, इसमें वो लिखे हैं 4 lifelines. The 4 lifelines, and there are 50 tips to live long. The first tip is कि घर में weighing scale हो, रोज अपने को वजन करें, हफ्ते में एक दिन में। 4 lifelines. The first is slim and fit. Slim and fit. And you do not know what fitness means. Fitness means the exercise level is what we test by talk test. Talk test मतलब आप बोल नहीं सकते, एक सेंटेंस पूरा नहीं करो, that is exercise. So slim and fit. The second, of course, is when to eat, what to eat, and how much to eat. And how much के लिए simple formula, use the dessert plate, don't use the dinner plate. बुरी बातें हैं ना, सारी बातें बुरी हैं, पर ठीक है, कभी कभी पार्टी पे, बर्थडे पे फुल प्लेट में ले लिया, बाकी डिनर प्लेट इज ए गुड प्लेट. एंड थर्ड इज ए रेस्टोरेटिव स्लीप एंड दिनचर्या, एंड 7 hours आई नो इज स्लीप. मतलब इसमें भी लिखा है, मेरे फादर ने मुझे बताया था, तो दुनिया में 2.5 सुख हैं, दुनिया में 2.5 सुख हैं. पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हेल्दी माइंड. पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है रात को अच्छी नींद आ जाए, बाकी आधा सुख पूरी दुनिया. तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स कि यार जॉब चली जाएगी, पैसे चले जाएंगे. अच्छे से सोओगे और हेल्दी रहोगे, बाकी जिंदगी ठीक रहेगी. एंड फोर्थ लाइफ लाइन इज मेडिसिन. सो डोंट एवर यूज लाइफ लाइन 4. डोंट आउटसोर्स. आपने बिल्कुल हिट किया. This is my philosophy, and I tell my kids, don't take medicine. Don't outsource your health. Earn your health. Health cannot be given. It has to be earned. Thank you, sir. Now, can we? सर एक लास्ट limit. Perhaps too many questions, but I think 30-40 years ago, and I share the same ideas. My friend asked a question because he has been waiting. that's okay. Dr. Veni Jain. I'm a cardiologist, and a very common book that we refer to in counseling about weight loss is a book called Obesity Code, CODE. Very, very popular book. The author stresses about intermittent fasting, and I was a little surprised that I thought you will be very in support of fasting and intermittent fasting. Can you give your sense to it, your ideas? Yeah, first to tell you, with all respect to your cardiology community, this book was launched in Mumbai a few months ago, 2 months ago. And we had one of our guests of honor, Dr. Panda, from Asian Heart in Mumbai. And he had read the whole book, and I was very pleased and kind of indebted to him that he is going to put this book in the patients area free, whoever wants. He says, after reading this, I don't have to tell patients how to get protected from heart disease. So Dr. Panda said, I'll keep it there. Anyone who wants can take the book, read it, so that I don't have to tell them what should be done. So that is part 1. Part 2, intermittent fasting can be for, let's say, few months. It's not a bad idea. But I think time-restricted eating is a better idea, and that becomes part of your life. Time-restricted means if you can manage by 8 o'clock. Why is it important, time-restricted eating? And I want everyone, this is a science question, but I want. When you eat, you do not eat. It is your bacteria which eats. They will never go to sleep
till 2 hours after your food. आपने 8 बजे खाया, your bacteria are trying to take out the energy and they are working. And this is the 2017 Nobel Prize whole thing, that if you sleep early and your clock genes, both the central clock and the peripheral clocks work together, you are much better off. To put it politely, that eating early is better. Second part, if you eat the same food at 6 o'clock and you eat the same food at 10 o'clock, 15% more calories are taken out from the same food. These are papers in Science and Nature कि उसको रात को खाना दिया या शाम को खाना दिया. The animals, the mouse. So the bottom line is, if you are eating late, then you extract much more food, calories from the same food. So in my mind, eating early and not eating for 12 hours in the night and day is a better idea than a intermittent fast. मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, और चूंकि आपने कहानी अगर जो पर्सनल रेफरेंस है, तो मैं नाना बनने की दिशा में हूँ. तो जो बनने वाली माँ है वो क्या चीज़ें ध्यान में रखे हो. और आपने तो कहा कि फैटी लीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 महीने का बच्चा है तब से ही उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए. तो ऐसी क्या टिप्स हैं जो वुड बी मदर्स के लिए आप दे रहे हैं? देखो, वुड बी मदर्स का सबसे ज़रूरी है कि यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. और अगर आप प्रोडक्ट अच्छा चाहते हैं तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर तो आप हो. अगर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ठीक नहीं हुआ, जैसे माँ और बाप, तो बच्चा क्या पैदा होगा इसका अंदाज़ आप लगा सकते हैं कि हो सकता है, इट्स नॉट अ वेरी राइट वे ऑफ सेइंग, बट थोड़ा डिफेक्टिव पीस बन सकता है. अच्छा, गाड़ी अगर डिफेक्टिव बन जाए, फोर्ड की गाड़ी है तो वापस बुला लिया आपने, उसका हैंडल ठीक कर लिया, गियर ठीक कर लिया, बैटरी बदल दी, पर बच्चा पैदा होने के बाद आप उसे ठीक कर पाएँ, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए जो होने वाली माँ हैं और फादर, उनको ये ध्यान रखना है कि दे आर इन गुड हेल्थ, अदरवाइज डोंट प्रोड्यूस. यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. द चाइल्ड में आस्क यू व्हेन ही ग्रोज अप, आपने मुझको क्यों पैदा किया जब आप खुद ही अनहेल्दी थे. तो फॉर यू, आप नाना बनने वाले, देखें कि आप की जो बेटी जो है वो, इसमें एक कहानी है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक वो गई, उसको बच्चा चाहिए था, सेकंड चाइल्ड. गायनेकोलॉजिस्ट ने मना कर दिया कि भाई जब तक तेरा वेट ठीक नहीं होगा, तो पतली दुबली नहीं होगी, सेकंड चाइल्ड मत करना. तो मैं चाहता हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, ये सारे लोग सीखें और इस बात को अमल में लाएं. और आप एज सच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन अशोक, यू शुड कन्वे दिस मैसेज कि अंडर वेट या नॉर्मल वेट मदर इज़ बेटर देन ओवर वेट और ओबीज मदर. एंड येस, हम लोग को कौन ट्रेनिंग देता है. आप जैसे प्रोफेशन में जाते हैं, मदरहुड इज़ इन ए वे इज़ ए प्रोफेशन, इज़ ए शॉर्ट टर्म प्रोफेशन ऑफ मे बी 1 to 3 years. तो क्या हमने अपनी मदर्स को, होने वाली मदर्स को सिखाया कि तेरे को बच्चे को ऐसे रखना, इतना वेट होना चाहिए, ये खिलाना है, कब खिलाना है, बाहर का ये नहीं देना. 3 साल की उम्र तक अगर उसे शुगर कम से कम दी जाए तो बच्चा बहुत अच्छा होगा और हेल्दी रहेगा. पर हाँ, शुगर देना यंग एज में अच्छा नहीं. तो बाकी बहुत सारी डिटेल इस किताब से भी पता कर सकते हैं. हम बात को समाप्त करेंगे. मैं सिर्फ ये विद्यु विनोद चोपड़ा ने जो कहा है ये पुस्तक के बारे में कि बुक इज़ लाइक रीडिंग अ फिल्म स्क्रिप्ट, easy to understand, highly educative and yet entertaining. Reading this book can save your life. तो बुक की बात नहीं करते हुए, समय की सीमा है, इसलिए मैं, आप इतने सहज कैसे रह जाते हैं. जब मैं आपको सुन रहा था, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, ऑफकोर्स आप शशि जी के साथ रहे, इसलिए भी मेरे मन में आपके लिए एक अलग प्रकार का आदर और आत्मीयता सहज आ जाती है. बट स्टिल यू गिव द काइंड ऑफ फीलिंग वेयर यू आर रिलेटेबल. आई थिंक दैट यू डू वर्क. आई थिंक ये पेरेंट्स के कारण है. मैं जो भी हूँ, फादर ने मुझे अच्छे जीन्स दिए और ये कहा कि दुनिया में 2.5 सुख हैं. पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा रात को अच्छी नींद आना, और बाकी आधा सुख पूरी दुनिया. जितनी माया, रुपया, पैसा, अगर आपके पास हेल्थ नहीं हुई या आप सो ही नहीं पाए तो किस काम की. तो मैं उसी में विश्वास रखता हूँ. आई रिमेन कूल, लीव ऑल रेस्ट टू द गॉड एंड ट्राई एंड डू माई जॉब. तो आपकी बात करते मैं कृष्ण भगवान की तरफ जाता हूँ. युक्त आहार विहारस्य, तो नियम भोजन करने का, नियम से नींद लेने का, तो फिर आप योगी बन सकते हो. तो मेरे साथ ये आधुनिक योगी हैं जिनकी पुस्तक ओन योर बॉडी को मैं ओन कर रहा हूँ फिलहाल, और इसको अच्छे से पढ़ के मैं पचा लूँगा. बहुत बहुत धन्यवाद है आपको. नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूँगा तो अशोक ऐसा अरे ये तो खतरनाक है, जल्दी मत मिलिए.